Good afternoon, everyone. So today we will start your chapter Our Environment, and this is the most important chapter for Sainik School and RMS, and it is too easy. Okay, and this is the first chapter of your chemistry and third chapter of science. We did food and health, and in this chapter we will cover communicable and non-communicable disease, and second chapter is animal habitat and adaptation. From now we will start with our environment chapter. Okay, let me start. Anyone knows what is environment? What is our environment? Anybody who can tell me what is environment? Okay, Swarit, can you tell me what is environment? Our surroundings. Our surroundings. Very good. Varun, can you tell me anything about environment? What is environment? All human, plants, animals. Very good. So, okay, lower your hand. I will explain you. Hands down, beta. I will explain you what is environment. Environment is the surroundings which is around us. Everything which is around us is called the part of our environment. Means anything. It will be air, it can be air, it can be water, it can be plants and animals, it can be soil, it can be sunlight. Everything which is around us is called environment. Means जो भी हमारी surroundings में है, this is called environment. Okay, which is around us like air, water, sunlight, plants, soil, animals, human beings, microorganisms. Environment is the area where living organisms live. जहाँ पर living organisms live करती हैं, that is called environment. And जो हमारे living beings की life को able बनाते हैं survive करने में, that is called our environment. Means environment क्या होता है? Which is around us. Everything which is around us is called environment. So our environment is divided into two parts: biotic and abiotic components. Biotic components are all living things and abiotic are all non-living things. Means biotic things are living things like plants, animals, human beings, bacteria, fungus, protozoa, algae, which have life are called biotic things, and which do not have life, these are called abiotic things like water, soil, air, minerals, light. And we depend on abiotic things like let us see, plants cannot survive without water, without soil, without light, and without air. So we are dependent on these non-living things. Animals cannot survive without water, without plants, without sunlight, without air. So these we are dependent on abiotic things. Okay, when we interact with these organisms, that term is called ecosystem. Okay, let us see, bacteria and fungus, these cannot survive without dead organic matter. Okay, they are dependent on organic matter. So when we depend on abiotic things or a biotic thing, that term is called ecosystem. डिफरेंस क्या है इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट में? एनवायरनमेंट में ये थिंग्स आती हैं, these all are the components of environment. And when we depend on these abiotic things or biotic things, that is called ecosystem. Ecosystem is the community where the biotic and abiotic elements interact with each other. जब हमारी एक ऐसी कम्युनिटी जब बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे को यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. उसको क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम.
Let me clear you first of all what is environment. Environment are the components which are around us, like biotic or abiotic. When we depend on abiotic things or we interact with abiotic or biotic things, like animals interact with animals, किस किस के साथ interact करते हैं? They eat plants, they use water, they use air, they use light, they use land. So this is called ecosystem. Next, human beings. What human beings use? Plants for food, water for drinking, air for breathing, light for seeing. So this is called ecosystem. When we when we interact with uh, biotic or abiotic things, that term is called ecosystem. Clear, beta? What is environment and what is ecosystem? Environment is consists of biotic and abiotic things. When we depend on or when we interact with abiotic or biotic things, that term is called ecosystem. Okay. Next is the term atmosphere is related with air. When I am talking about atmosphere, it is related with air. Okay. जब भी मैं एटमॉस्फेयर टर्म को यूज करूंगी बेटा, तो मैं हवा की बात कर रही हूँ, एयर की बात कर रही हूँ. If I'm talking about biosphere, it is related with living beings. Okay, means all the living beings like animals, plants, human beings, microorganisms, all are living beings. And when I am used to say about biosphere, it is related with living beings. Next is hydrosphere. Hydrosphere is related with water. Means when I am talking about hydrosphere, it is related with water. Okay. Then lithosphere, when I'm talking about lithosphere, it is related with land. In the science, you will use for land lithosphere, water for hydrosphere, living beings biosphere, and air for atmosphere. You can use it also. आप लैंड के लिए लिथोस्फीयर टर्म यूज कर सकते हैं, वाटर के लिए हाइड्रोस्फीयर यूज कर सकते हैं, लिविंग बींग्स के लिए बायोस्फीयर, एयर के लिए एटमॉस्फेयर. Let us see in this figure: atmosphere, air; lithosphere, land or earth; hydrosphere, water. When I'm talking about water bodies, it is hydrosphere. Then biosphere is related with all the living beings. It can be aquatic living beings. It can be human beings. It can be animal. It can be microorganism. ये कोई भी हो सकता है biosphere. Okay. Next, biotic components and abiotic components. देखिए बेटा, biosphere is termed from biotic. देखिए, this biosphere is termed from biotic things. Okay, so biotic are living things like human beings, animals, plants, microorganisms. Abiotic components are non-living things on which we are dependent, इसके ऊपर हम dependent होते हैं, and that is called ecosystem, like air, water, sunlight, soil, rocks, clouds. These all not having life. These all are non-living beings. Then what is the difference between environment and an ecosystem? Okay, आपको बेटा फर्स्ट स्लाइड में ही क्लियर हो गया होगा कि एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है. What is environment? Environment is the everything that's around us, which is present inside, outside us is called environment, like air, water, sunlight, soil, anything. It can be anything. Then when we interact with biotic and abiotic things, that is called ecosystem. Abhay, Malik, what are you doing, beta? Listen to me very carefully. So ecosystem, when we interconnect or interact with biotic and abiotic things, that is called ecosystem. Next is food chain and food web. What is food chain and what is food web? इसमें बहुत difference है, देखिए. What is food chain? Food chain, first of all, decomposes the dead organic matter into the soil. Decomposes dead organic matter को bacteria and fungi क्या कर देंगे? Decompose कर देंगे. Then producers खुद ही grow होते हैं. Plants अपना खाना खुद बनाते हैं. Means these are called producers.
फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रास को कौन ईट करेगा? ग्रास होपर। एंड ग्रास होपर को बेटा प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है, मीन्स जो सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल है, ठीक है, मीन्स ये सिर्फ प्लांट्स को ईट करेगा। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं लाइक दोज हु आर कार्निवोरस, मीन्स जो इन ग्रास होपर्स को ईट करेंगे, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। आफ्टर दैट दिस स्नेक ईटन दिस ब्लू बर्ड, these are called territory consumers, means जो अपने से small animals को eat करते हैं, these are called territory consumers. Then this owl make this snake prey and eat this, so this is called apex or predator, means these are dependent on each other, means जो ग्रास ऊपर होगा वो सिर्फ ग्रास को ही ईट करेगा। देन ग्रास ऊपर ब्लू बर्ड के द्वारा ईट किया जाएगा, स्नेक ब्लू बर्ड को ईट कर लेगा, आउल स्नेक को ईट कर लेगा, मीन्स ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन एक सिस्टमैटिक वे में चलती है, एक सीक्वेंस वे में चलती है, बट जो कि फूड वेब होता है, इन दिस एनीवन कैन ईट एनीवन, कोई भी किसी को भी ईट कर सकता है, ठीक है, मीन्स ये फॉक्स अर्थवॉर्म को भी ईट कर सकती है, स्नेक्स फ्रॉग्स ग्रास होपर को भी ईट कर सकते हैं, ईगल रैबिट को भी ईट कर सकती है। सो दिस इज कॉल्ड अ फूड वेब। फूड वेब में कोई भी किसी को भी ईट कर लेगा। अब देखिए डिकम्पोजर्स क्या होते हैं बेटा? डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को। देन प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं बेटा? प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑल हर्बीवोरस एनिमल्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि प्रोड्यूसर्स को ही ईट करते हैं। Then secondary consumers like frog and snake, which eat only carnivore, means which are carnivorous animals, which eat only primary consumers. Then tertiary consumers are also consumers, but ये अपने से छोटे एनिमल्स को ईट करते हैं. So these are called tertiary consumers. Okay. So our next topic is what is food chain and what is food web. The sequence of transfer of matter and energy in the form of food from organism to organism, means food और energy का transfer होना one organism to another, that is called food chain. And what is food web? Means anyone eat anyone. So in this interconnection word, a food web is the natural interconnection of food chain. इसमें कोई भी किसी को भी eat कर सकता है, interconnected है ये chain. So this is called food web. Let me clear you again. What we did is, what is environment? Environment is the which is around us is called environment. It can be air, water, plants, animals, human beings. Environment which is around us means जो भी ऐसी organism जो हमारे surroundings में हैं, this is called environment. Environment is divided into two parts: biotic components and abiotic components. Biotic components are living beings, abiotic are non-living beings. Living beings are like plants, animals, bacteria, fungus, protozoa, and non-living beings are like soil, air, minerals, light, sunlight. And biotic things are dependent for their food on abiotic things, and this is called ecosystem. When we interact with abiotic things or biotic things for our needs, that is called ecosystem. Ecosystem is the community where the biotic and abiotic elements interact with each other. जब वो एक दूसरे के connection में आते हैं, interact करते हैं, so that term is called ecosystem. Then we did atmosphere. Atmosphere is related with air. Biosphere is related with living beings. Hydrosphere is related with water. Lithosphere is related with land. You have to learn this. Okay. Then what are biotic and abiotic things? Biotic components are living beings. For example, human beings, animals, plants, microorganisms, all are biotic things. Then abiotic things are non-living things on which we are dependent for the food, like air, water, sunlight, soil, rocks, clouds, all are the example of abiotic things. Then what is the difference between environment and an ecosystem?
एवरीथिंग विच इज अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरमेंट। मीन्स हम बायोटिक और एबायोटिक, अगर आपसे पूछा जाए एयर वाटर सनलाइट ये क्या है, हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है। बट व्हेन वी इंटरेक्ट विद एयर वाटर सनलाइट दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, उसको इकोसिस्टम बोला जाएगा। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम। Then we did food chain and food web. What is food chain? When a sequence of food eating is called food chain. When anyone can eat anyone, that is called a food web. Means food chain में एक sequence चलेगा बेटा, ग्रास होपर ग्रास को ही ईट करेगा, बर्ड्स ग्रास होपर को ही ईट करेंगे, स्नेक्स एनिमल्स को ही ईट करेंगे, स्मॉलर एनिमल्स को, और आउल अपने से छोटे एनिमल्स को ईट करेंगे। सो दिस इज अ फूड चेन। बट फूड वेब में कोई भी छोटा एनिमल बड़े एनिमल को ईट कर सकता है, या बड़ा छोटे को भी, कुछ भी हो सकता है इसमें। सो दिस इज कॉल्ड अ फूड वेब। इन दिस आई टोल्ड यू decomposers are the microorganisms which decompose the dead organic matter into the soil. What are producers which make their own food? Primary consumers which are dependent on producers. Secondary consumers which are dependent on primary consumers, like these all are carnivorous animals. Then tertiary consumers are dependent for their food on secondary consumers. Okay beta. So next we did the definitions of food chain. The sequence of transfer of matter and energy in the form of food from organism to organism is called food chain. What is a food web? A food web is the natural interconnection of food chains. और food web क्या होती है? एक interconnection होता है food chain का. Next, ये जो कि है बेटा ये important है इसमें, और ये अच्छे से समझना, ठीक है। ये हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड है कि कौन किस तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ इकोलॉजिकल पिरामिड। देखिए बेटा, इन दिस decomposers decompose the dead organic matter into the soil and recycle the nutrients. Means सारे nutrients soil में आ जाएंगे उस organic matter के, dead organic matter के। देन यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी इकोलॉजिकल पिरामिड। नंबर 1, सबसे पहले जो कि सनलाइट की एनर्जी लेते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही कंज्यूम करते हैं सनलाइट की एनर्जी को, ठीक है। मीन्स टोटली यूज 100% प्राइमरी कंज्यूमर्स करते हैं, ठीक है। देन एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर होती है अनदर टू अनदर, इससे फिर इसको ट्रांसफर होगी एनर्जी, देन इसको और देन इसको। अब ये जितने भी एनिमल्स होते हैं इनमें ये सब क्या करते हैं, एनर्जी लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। जैसे हम भी, जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जो कि अपनी हीट को लूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एनर्जी लॉस्ट एज अ हीट। अब देखिए सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बेटा, ऑल दी प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, मैंने अभी बताया था आपको। और प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, सनलाइट की एनर्जी को यूज करके, ठीक है। देन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को ही ईट करते हैं, जैसे कि ग्रास होपर इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब सेकंड जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मीन्स जो कि सिर्फ प्लांट्स को ही ईट करते हैं, मीन्स जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। मीन्स उस ग्रास होपर को एक बर्ड ने ईट किया तो बर्ड क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, और इसकी एनर्जी इसने ले ली। देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या होगा बेटा, थर्ड लेवल कंज्यूमर। थर्ड लेवल कंज्यूमर में लाइक स्नेक्स, स्नेक क्या ईट करेगा, उस बर्ड को ईट कर लेगा, दीज आर कॉल्ड थर्ड लेवल कंज्यूमर्स। एंड देन उस स्नेक को किसी फॉक्स ने या लॉयन ने या ईगल ने, जिसने भी ईट किया, वो क्या होंगे, अपेक्स प्रेडेटर्स। Let me explain you again what are decomposers which decompose the dead organic matter into the soil and recycle the nutrients. Primary producers are the plants which make their own food with the help of sun's energy. In this, all levels will lose their energy in the form of heat. In this, energy is transferred to next level. Okay, like this. In this,
Primary consumers are the plants which make their own food. Primary consumers are those organisms which eat the primary producers. For example, grasshopper. Then secondary consumers are all the carnivorous animals which eat the primary consumers, like bird eat the primary consumers. So it is the example of secondary consumer. Then snake eats the secondary consumer, means bird is eaten by a snake. Snake is a third level consumer. Then snake is eaten by the eagle. Eagle is a apex predator. So this is the ecological pyramid. Okay, how the organisms getting the energy, sunlight's energy, or how nutrients are recycled, how heat is lost. नेक्स्ट, अब इस डायग्राम को बेटा ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने ली है इमेज. दिस इज ओनली फॉर क्लैरिफाई यू. दिस इज कॉल्ड प्लैंकटन्स, मीन्स प्लैंकटन सबसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओशियंस के, जिनको ईट करते हैं क्रैब्स. Crabs are eaten planktons, and then these crabs are eaten by the fishes, small fishes, and then small fishes is eaten by the large fishes, and the large fishes is eaten by the killer fishes. So in this way ocean pyramid is continuing. ठीक है, इस तरह से चलता है ये. Plankton is eaten by the crabs, crabs is eaten by the small fishes, small fishes are eaten by the fishes, and fish are eaten by the killer fishes. Okay, ये है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड इन ओशन. ओशंस में इस तरह से चलता है. Let me explain again what is environment. Environment is the surroundings or the things which is around us is called environment. It can be air, water, plants, animals, human beings. Anyone is environment. Then environment is divided into two parts, biotic and abiotic. Biotic are living beings, abiotic are non-living things. When we depend on these biotic and abiotic things, that term is called ecosystem. Then we did atmosphere is related with air. When I am using term atmosphere, in this I am using the word air. If biosphere I am using, it is related with living things. Hydrosphere term is related with water. Lithosphere is related with land. Then we did biotic components and abiotic components. Biotic components are all living beings and abiotic are all non-living beings. Then the difference between environment and ecosystem. Everything which is around us is environment, and when we dependent or interact with each other, biotic and abiotic, that is called ecosystem. Then in a food chain, a sequence is continued, means primary is eaten by secondary, secondary is eaten by tertiary, and a tertiary is eaten by apex. It is a food chain. And in the food web, anyone can eat anyone, means apex can eat secondary consumer also, or apex can eat primary consumer also. So this is a food web. Then ecological pyramid. In this, decomposers decompose the dead organic matter into the soil. Then nutrients are recycled. Primary producers are those which make their own food, and primary producers are eaten by the primary consumers like grasshopper. And then grasshopper is eaten by the secondary consumer like birds. Then birds are eaten by the like snake, third level consumer. Snake is a third level consumer. And then snake is eaten by a eagle. Eagle is a apex predator, and these all are losing their energy. Okay, this is called a ecological pyramid. So in the next, this is the main topic for today, characteristics of abiotic things. We will discuss abiotic things very clearly and very explanatory manner. So first is air. What is air? Without air, no living being can be. सभी को पता है, without air, no living being can live. कोई भी living being without air जिंदा नहीं रह सकती है. So in this,
There are the three major gases which are present in air. Oxygen 21%. You have to learn this value. If anybody asks you what is the percentage of oxygen in air, it is 21%. If anybody asks you which is the most abundant gas, that is nitrogen. Means सबसे ज़्यादा कौन सी है? It is 78%, which is nitrogen gas. Second is carbon dioxide gas. It is 0.03%. Okay, carbon dioxide is its percentage is 0.03%. You have to learn this. Okay, what is the percentage of oxygen? 21%, nitrogen 78%, and carbon dioxide 0.03%. Next, the most important topic of air, layers of air. First of all, you have to learn this that layers of air are the protective layer of earth. Means ये आपकी earth को protect करती हैं layers. This is our earth. हमारी earth के ऊपर 5 layers हैं. There are 5 layers on the earth. First one is troposphere जिसमें हम रहते हैं. Second is stratosphere. Third is mesosphere. Fourth is thermosphere. And fifth is exosphere. You have to learn this. So thermosphere is also called ionosphere. इसको क्या बोला जाता है? ionosphere भी. ठीक है. Next is the distance between these layers. The first layer whose distance is 20 km from the earth. Second is stratosphere whose distance is 50 km from the earth. Next is mesosphere layer whose distance is 80 km from the earth. Next is thermosphere layer whose distance is 700 from the earth. And exosphere is 10,000 meter above. Okay. Now, when you goes upright means जब आप ऊपर जाएंगे तो उतनी ही एयर की जो लेयर होगी वो थिक होती जाएगी. मीन्स पतली होती जाएगी जितना आप ऊपर जाएंगे. ओके. मीन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही कम होती जाएगी जितना आप अपराइट जाएंगे, ऊपर जाएंगे. ठीक है. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्रोपोस्फियर लेयर, जिस लेयर में हम लोग रहते हैं. इसमें आपकी आती हैं योर बिल्डिंग्स, माउंटेन्स एंड क्लाइमेट चेंजेस टेक्स प्लेस इन ट्रोपोस्फियर लेयर. ओके, अंडरस्टैंड. Second is stratosphere layer. This is the second layer and which contains ozone layer. In this ozone layer is present which protect you from the ultraviolet rays of sun. Sun की harmful rays होती हैं जिससे आपको ozone layer protect करती है, जो कि कौन सी लेयर में है? स्ट्रेटोस्फियर लेयर में. इसमें क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज आपको स्किन कैंसर कॉज करती हैं, आइज प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. तो सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फियर लेयर विच प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द ultraviolet rays of sun and the aeroplanes flies in this stratosphere layer. Aeroplane इसी लेयर में फ्लाई करते हैं. ओके, योर प्लेन्स. नेक्स्ट इज mesosphere layer. दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर. ये आपकी सबसे कोल्डेस्ट लेयर है. एंड नेक्स्ट वन इज thermosphere layer and this is the hottest layer. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज exosphere which is the uppermost layer. In this layer, like any asteroid come near to your earth, अगर हमारी अर्थ के नियर कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है, so it's the function of thermosphere layer that it will melt it. थर्मोस्फीयर लेयर उसको मेल्ट करेगी, एस्ट्रॉइड को, स्टोन को, पत्थर को. नेक्स्ट उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया थर्मोस्फीयर लेयर ने. Then mesosphere layer is the coldest layer which convert it into the meteors form. Means small stones के फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा इसको? mesosphere layer. And which is the coldest layer. Okay. और शूटिंग स्टार्स जो आपके अपीयर होते हैं वो इसी लेयर में ही अपीयर होते हैं. ठीक है. These are called meteors. So I will repeat again. Troposphere layer is the first layer. Second is stratosphere layer. Third is mesosphere. Fourth is thermosphere. And fifth is exosphere. Thermosphere is also called ionosphere. Thermosphere को ionosphere भी बोला जाता है. Okay. Second one is its distance. Troposphere 20 km, stratosphere 50 km, mesosphere 80 km, thermosphere 700 km, and next exosphere is 10,000 km above from the earth.
When you goes upright in these layers, layer will be become thinner, sorry, पतली होती जाएंगी आपकी जो अर्थ की लेयर्स हैं. First of all, troposphere layer contains mountains, buildings, and your weather changes takes place in troposphere layer. Second is stratosphere layer, which contains the ozone layer. And ozone layer protect you from the harmful ultraviolet rays. ओजोन लेयर आपकी अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, सन की हार्मफुल रेज से. और एरोप्लेन्स आपके इसी ओजोन लेयर से डाउनवर्ड ही फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में. देन थर्ड इज मेसोस्फीयर लेयर विच इज द कोल्डेस्ट लेयर, एंड थर्मोस्फीयर लेयर इज द हॉटेस्ट लेयर, एंड इससे अबव होती है अपरमोस्ट लेयर इज एक्सोस्फीयर लेयर विच कंटेन्स द सैटेलाइट्स. ओके, इफ एनी एस्ट्रॉइड कम नियर टू द अर्थ, अगर कोई एस्ट्रॉइड मीन्स कोई स्टोन, कोई पत्थर अगर आपकी अर्थ के पास आ रहा है तो उसको थर्मोस्फीयर लेयर क्या करती है, मेल्ट कर देती है. इट विल मेल्ट बाय द थर्मोस्फीयर लेयर इफ एनी एस्ट्रॉइड कम नियर टू योर अर्थ. देन मेसोस्फीयर layer cools down that stones and appears these stones in the form of shooting star. मीन्स जो कि आपको टूटता हुआ तारा जिसको बोलते हैं, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो एक एस्ट्रोड होता है जो स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, इतना गर्म होता है, जिसको मेसोस्फीयर लेयर क्या करती है, कूल डाउन करती है. और अगर वो अर्थ पर गिरे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर स्मॉल स्टोन कोई हमारी अर्थ पे फॉल डाउन हो रहा है. जितने भी आपका जो इंटरनेशनल स्पेस शटल वो है, वो भी थर्मोस्फीयर लेयर में ही है. ठीक है. नेक्स्ट इज uses of oxygen. You have to learn this. I will explain you what is the use of oxygen. Oxygen is represented by O2. This is the representation of oxygen. What is the use of oxygen? Oxygen is used for breathing and burning. ऑक्सीजन यूज की जाती है ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, और बर्निंग के लिए, आग लगाने के लिए. जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इफ आई प्लेस अ कैंडल, बर्निंग कैंडल, एंड आई पुट अ ग्लास ऑन इट, इट विल, क्या होगा बेटा, वो नहीं जगेगी, बर्न नहीं होगी, बिकॉज इट नीड्स ऑक्सीजन. सो बर्निंग नीड्स ऑक्सीजन. Next is in hospitals for artificial respiration, like ventilators. We use ventilators as a artificial respiration. Means oxygen hospitals में भी use होती है. Next is mountaineers, जो कि mountains पे climb करते हैं. Astronauts, जो कि space पर जाते हैं. Sea divers, जो पानी में swim करते हैं, water में. So they carry oxygen cylinder with them. Next is ऑक्सीजन इज नीडेड बाय एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं. देन जो रॉकेट्स होते हैं, आपने रॉकेट्स के पीछे देखा होगा, बहुत फायर लगती है. दिस इज द कंबशन ऑफ फ्यूल. मीन्स वो फ्यूल जलता है बेसिकली और प्रेशर इंक्रीज होता है. सो उस रॉकेट में कौन सी ऑक्सीजन यूज की जाती है, दैट इज लिक्विड ऑक्सीजन. Next is uses of carbon dioxide. What is the use of carbon dioxide? Carbon dioxide is used by fire extinguishers. If anywhere कहीं पे फायर हो जाए या कहीं पे बर्न हो जाए तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स को बुलाया जाता है, जो कि क्या करते हैं, आग बुझाने के लिए यूज करते हैं. सो उन फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स में क्या होता है, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. And carbon dioxide gas is represented by CO2 gas. Okay, it is represented by CO2. CO2. Okay. Yes, it is used in fire extinguisher. Carbon dioxide gas is used by fire extinguisher. Then solid carbon dioxide is used in refrigerators. आपके जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें कौन सी गैस यूज होती है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जो घर पे रेफ्रिजरेटर होता है आपने देखा होगा, जहां पर हम वाटर टू आइस कन्वर्ट करते हैं वाटर को. सो वहां पर एक प्लेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट इज कॉल्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके.
solid carbon dioxide gas, that is also called dry ice. It is used in aerated drinks. जितनी भी आप drinks लेते हैं, like cold drinks, soda water drinks, these all contains carbon dioxide gas. Then plants use करते हैं carbon dioxide gas for their food, prepare their food, अपने food को prepare करने के लिए. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कौन यूज करता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर मेकिंग एमिनो एसिड. जो प्लांट्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? अमीनो एसिड यूज, सॉरी, नाइट्रोजन यूज करते हैं, जिससे वो अमीनो एसिड बनाते हैं और अपने खाना बनाने के लिए, स्टार्च स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. आई विल रिपीट अगेन, व्हाट वी डिड टुडे इज विदाउट एयर no living being can live. विदाउट एयर कोई भी लिविंग बीइंग जिंदा नहीं रह सकती है. What is the percentage of oxygen? 21%, nitrogen 78%, and carbon dioxide 0.03%. Next, we did the layers of air. There are 5 layers of air: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. These all layers are protective layer. Troposphere layer contains mountains, buildings, and climate changes. Stratosphere layer contains the ozone layer, which protect our Earth from the harmful ultraviolet rays. Then mesosphere layer contains meteors. And then thermosphere layer contains the space shuttles. And then exosphere layer contains the satellites. Then what is the use of oxygen? Oxygen is used for breathing and burning, in hospitals for respiration, mountaineers and sea divers as a oxygen cylinder. It is needed by aquatic plants or animals also, and it is used in rocket also. Next is carbon dioxide. You have to learn these uses. Carbon dioxide is used by fire extinguishers to stop the fire. It is used in the form of solid carbon dioxide gas. It is called dry ice. It is in the refrigerator. जो रेफ्रिजरेटर आप यूज करते हैं घर पे, उसमें आपके क्या होता है, जहाँ पे आप आइस क्यूब्स फॉर्म करते हैं, वहां पर क्या होता है, आज अपने रेफ्रिजरेटर में देखना, पीछे एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्लेट होती है. सो दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. देन इट इज यूज्ड इन एरेटेड ड्रिंक्स. जितने भी आप सोडा वाटर, लिम्का, कोका कोला पीते हैं, उसमें भी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एंड प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयर देयर फूड. नेक्स्ट इज इट इज नीडेड बाय प्लांट्स, एनिमल्स फॉर मेकिंग एमिनो एसिड. नाइट्रोजन को N2 से रिप्रेजेंट किया जाता है. Today's our topic is water. This is the most important topic. Okay, listen it very carefully. So यहाँ से करेंगे बेटा, आज हम यहाँ से है आपका टॉपिक स्टार्ट आज का. Okay, what is the importance of water in our life? Water is necessary for our bathing, for drinking, for plants also, for animals also, for cleaning purpose also. So water is also the most important factor for human beings, animals and plants. Then 71% of earth is covered with water. हमारी जो अर्थ है वो 75% अर्थ से कवर्ड है. 71, ये देखिए बेटा, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि हमारी जो अर्थ है उस पे 1 एरिया ही लैंड है, अदरवाइज ऑल इज कवर्ड विद वाटर. सो दिस 3 पोर्शन इज कवर्ड विद वाटर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में जो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर में, वो वाटर साइकिल है. यू हैव टू नो दिस. व्हाट इज अ वाटर साइकिल? फर्स्ट ऑफ ऑल, द सरफेस वाटर इज गेट्स हीटेड बाय द रेज ऑफ सनलाइट. सबसे पहले जो सनलाइट की रेज अर्थ पर पड़ती हैं सरफेस ऑफ वाटर पर, वो क्या करती हैं? वाटर वेपर्स को, वाटर वेपर्स की फॉर्म में बना देती है. जैसे आप कपड़ों को, क्लोथ्स को, वेट क्लोथ्स को आप ड्राई होने के लिए डालते हैं, तो वो वाटर बेसिकली जाता कहाँ है? इट विल गो इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. सो जब ये वाटर स्मॉल वेपर्स के फॉर्म में एयर में जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ओके, क्लियर है? जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर उड़ जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ओके, देन these water vapors
goes into the higher atmosphere. Okay, these condense in the cloud. Condense means होता है collect होना. Okay, when these water vapors collect into the clouds, this process is called condensation. When these clouds becomes too heavy, जब ये clouds बहुत heavy हो जाते हैं, so ये किसके form में fall down हो जाते हैं? In the form of rain, hail or snow. I will repeat again. There are three processes of water cycle. Number one is evaporation, two is condensation, and three is precipitation. First is evaporation, when the surface water gets heated by the heat of sunlight and evaporates in the form of water vapors and mix into the air. That process is called evaporation. When this water vapor reaches to the higher atmosphere or in the cloud and condense means collect hona, condenses into the form of water, that process is called condensation. When these clouds becomes too heavy, cannot carry the load of water, they will fall into the form of rain water, hail or snow. Snow के form में ये क्या हो जाते हैं? अर्थ पर गिर जाते हैं. So that whole is called like a water cycle. So here is the definition of water cycle evaporation. First of all, evaporation. When the surface water heated, जब ये surface water heated हो जाता है and convert हो जाता है into form of water vapors and mix into the air, that process is called evaporation. Okay. The second one is condensation. When these water vapors, जब वो हवा से water vapors higher atmosphere में जाते हैं and condense into the form of water and there they cool down, that process is called condensation. Third process is called precipitation. When these clouds don't carry the load of water or when the clouds becomes too heavy, it will fall down in the form of rain, hail and snow. And this process is called precipitation. Clear everyone? Okay. Next is conversion of water. What is conversion of water? There are three states of water. Water की three states होती हैं, देखिए. Solid, gas और liquid. Gases, vapors, जो कि हमने अभी किए थे, water vapors, small vapors. Solid means ice and liquid means water. These are the conversions. You have to learn this. Okay, I will explain you. Then you have to learn this. ये बेटा learning material है, आपको learn ही करना पड़ेगा इसको. So take a look on this diagram. First of all, when ice convert into the form of water, that process is called melting. जब ice को हम water के form में convert करते हैं, उस process को क्या बोला जाता है? Melting. Second one is when water converts into the form of gas, that process is called evaporation or you can say boiling also. ठीक है? जब हमारा लिक्विड गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब वो उड़ जाता है, तो उस प्रोसेस को या तो बॉइलिंग बोलेंगे या फिर इवेपोरेशन. नेक्स्ट वन इज गैस टू आइस. जब ये गैस आइस के फॉर्म में बनेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन. ओके, व्हेन गैस convert into the solid directly into the form of solid, that is called deposition. Here is the another one. When you freeze the liquid, means water को जब आपको ice की form में बनाना है, solid form में, that process is called freezing. When you freeze the water, that process is called freezing. When you convert the solid into gas, learn this by this way. S for solid, S for sublimation. When you convert the solid into gas, that process is called sublimation, solid to gas. And when these gas particles convert into the liquid, that process is called condensation. So beta, this diagram you have to learn this. Okay, there is no alternate for this diagram. You have to learn this. There are three states of water, solid, liquid and gas. When the solid becomes liquid, that process is called melting. When liquid converts into the form of gas, that process is called evaporation. When the gas converts into solid, that process is called deposition. And when the liquid becomes solid, that process is called freezing. When solid to gas, solid as sublimation. Solid to gas is sublimation. And when the gas converts into liquid, that process is called condensation. Next, our topic is sunlight.
What is the importance of sunlight in our life? So it is also the most important part of our life. Plants use sunlight for making their food. We also use plants for eating. So if plants will be die, we also die. So and we cannot see without sunlight. Without light हम देख भी नहीं सकते हैं. So इस सनलाइट में से जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फॉर सैनिक स्कूल, दीज आर दोज: स्पीड ऑफ लाइट एंड सनलाइट रीच ऑन अर्थ. सो जो लाइट की स्पीड है बेटा वो सबसे फास्टेस्ट है हमारे यूनिवर्स में. इससे फास्टेस्ट किसी की स्पीड बनी ही नहीं है स्पीड ऑफ लाइट से. ओके, सो इट्स स्पीड इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड के अंदर लाइट 3 लाख किलोमीटर पार कर जाती है. 3 लाख डिस्टेंस, 3 lakh kilometer. Okay, and in how much time sunlight reach on earth? It takes 8 minutes 20 seconds to reach on earth. Then soil. What is the importance of soil? Soil is also most important for human beings, or for plants also, for animals also, for us also. So soil is also the most important part of our life. This is the most important topic of our environment. What we will do now, जो हम अभी करेंगे बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके. फैक्टर्स विच अफेक्ट अवर एनवायरमेंट. देयर आर 6 फैक्टर्स विच अफेक्ट अवर एनवायरमेंट. ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एनवायरमेंट को बेसिकली खराब कर रहे हैं. ठीक है, वी हैव टू डिस्कस इट. फर्स्ट वन इज एसिड रेन, सेकेंड वन इज ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड वन इज ग्रीन हाउस गैसेस, फोर्थ वन इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, fifth one is deforestation, sixth one is pollution. We will discuss it. Acid rain, global warming, greenhouse gases, depletion of ozone layer, deforestation, pollution, air pollution, water pollution. First of all, let's take a look on acid rain. What is acid rain? When the harmful gases comes down with the rain is called acid rain. जब हमारी harmful gases अर्थ पर आती हैं विद द रेन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिड रेन. अब ऐसी गैसेस जो एसिड रेन कॉज करती हैं, देयर आर 3 गैसेस: सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. देखिए बेटा इस डायग्राम में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये व्हीकल्स होते हैं ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. These factories produce sulfur dioxide and one more there is carbon monoxide. अब कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है? अगर आप एक रूम को क्लोज कर देते हैं और उसके अंदर फायर, आग जला देते हैं, तो क्या होगा? एक ऐसी गैस प्रोड्यूस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एसिड रेन कॉज करती है. एंड व्हेन दीज 3 गैसेस कम्स डाउन विद रेन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिड रेन. अब ये एसिड रेन लैंड को भी इफेक्ट कर रही है, वाटर को भी इफेक्ट कर रही है और फॉरेस्ट को भी अफेक्ट कर रही है और बिल्डिंग्स को भी. So it also affects our environment. So acid rain is not beneficial for us. It is harmful for our environment. ये हमारे environment के लिए harmful है. Okay बेटा, what we did is today, first of all, water. What is the use of water? Water is helpful for human beings, animals, plants. Everyone need water for their survivals. Then we did the most important topic, water cycle. What is water cycle? First of all, जो हमारा surface water होता है, जैसे रेन हुई, रेन के बाद बेटा जो वाटर होता है वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है सनलाइट की हीट से. अब वो वाटर कहाँ जाता है? It will go into the air. वो वाटर एयर के अंदर जाता है और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोला जाता है. When water vapors reaches to the air, that process is called evaporation. When these water particles or water vapors reaches to the higher atmosphere or in the cloud and there they condense, means ये इकट्ठे हो जाते हैं, that process is called condensation. When the clouds becomes too heavy, it will fall on the earth in the form of rain, hail or snow. Hail like rain water की form में. So when water vapors comes into the air, that process is called evaporation. When this water vapors goes into the upper atmosphere and there they condense, that process is called condensation.
And when these water vapors come down on the earth in the form of rain water, hail means होता है like ओले ice के form में, and snow means बर्फ के form में गिरना. That process is called precipitation. So here is the definition of evaporation: when the surface water heated and convert into the form of water vapors and mix into the air. That is called evaporation. Condensation: when the water vapors reaches at the higher atmosphere and condense into the form of water and cool down. Means जब ये water vapors upper atmosphere में चले जाते हैं clouds में, that process is called condensation. When clouds do not carry the load of, or the clouds becomes too heavy, it will fall down in the form of rain, hail or snow. That process is called precipitation. Then we did the conversion of water. You have to learn this conservation, sorry. You have to learn this conservation of water, conversion of water. Solid to liquid is called melting. Liquid to gas is called evaporation or boiling. Gas to solid is called deposition. Then liquid to solid is freezing. Solid to gas is sublimation, and gas to liquid is condensation. You have to learn this. Then sunlight. What is the importance of light? Sunlight is important for plants also, for our eyes also. This is the most important point in the sunlight, the speed of sunlight. Speed of sunlight is 3 lakh kilometer per second. You have to learn this. Then sunlight reach on earth in 8 minutes 20 seconds. Sunlight 8 minutes 20 seconds में अर्थ पर reach करती है. Then soil is also most important part of our life. What is the most important topic in the our environment is factors which affect our environment for Sainik school, for RMS, for RIMC also. ये जो topics हैं बेटा, ये ही most important है our environment के. So listen to these points very carefully. What is acid rain? Acid rain means जब harmful gases अर्थ पर रेन के साथ आ जाती हैं, that process is called acid rain. When the harmful gases comes down with rain is called acid rain. Now the gases which causes acid rain is, there are 3 gases which causes acid rain: sulfur dioxide, nitrogen dioxide and carbon monoxide. Here is the diagram, take a look. The vehicles produce nitrogen dioxide. These factories produce sulfur dioxide. One more is there, carbon monoxide. What is carbon monoxide gas? From where it produced? It produced from a closed room. अगर आप एक रूम को क्लोज कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं उसको, और उसके अंदर आग लग जाती है किसी भी तरह, फायर हो जाती है, तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और जिसकी वजह से क्या होता है? एसिड रेन होती है. सो व्हेन द रेन कम्स डाउन, these gases mix into the rain, and that rain is called acid rain. And this acid rain pollutes the land also, pollutes the water also, and pollutes the forest also. It affects all of these things, and buildings also. So it is harmful for our environment. If anybody drink this water, acid rain water, he will be die. उसकी डेथ भी हो सकती है. अगर कोई फॉरेस्ट क्या हो जाते हैं? प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, हार्म हो जाते हैं, जल जाते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एनवायरमेंट. सो क्लियर है बेटा? व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन, व्हेन द हार्मफुल गैसेस comes down with rain, that process is called acid rain. Acid rain causes 3 gases: sulfur dioxide, nitrogen dioxide and carbon monoxide. Then what is global warming and greenhouse effect gases? Listen to this topic very carefully. The gases which absorbs the maximum rays of sunlight, that is called greenhouse gases. Okay, वो gases जो maximum sunlight की rays को absorb करती हैं, these gases are greenhouse gases. And what is global warming? इन gases का absorb करना और अर्थ के temperature का increase होना, that is called global warming. Clear हुआ? What is greenhouse gases? The gases which absorbs the maximum rays of sunlight. Greenhouse gases वो gases हैं जो maximum sunlight की rays को absorb करती हैं. And what is global warming? Global warming का मतलब है अर्थ का temperature increase होना due to greenhouse gases.
जो गैसेस मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रही हैं उससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गर्मी बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है? देखिए डायग्राम में सनलाइट की रेज पड़ी, अर्थ पर गैसेस ने एब्जॉर्ब किया, कौन सी गैसेस हैं वो, ग्रीन हाउस गैसेस। अब जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नाउ these gases are greenhouse gases which absorbs the maximum rays of sunlight, like carbon dioxide, chlorofluorocarbon, methane, water vapors, ozone layer, nitrous oxide. Let me tell you, carbon dioxide is produced by humans. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है सनलाइट की रेज को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम फ्रिज में यूज करते हैं, जो आपका नीचे वाला फ्रिज होता है जिसको कोल्ड रखने के लिए, जितनी भी चीजें आप कोल्ड रखने के लिए यूज करते हैं उनमें सीएफसी गैस यूज होती है। जैसे एसी हो गया, एसीज में सीएफसी गैस यूज होती है, आपकी कार्स में सीएफसी गैस यूज होती है। ओके, कोल्ड स्टोर्स में सीएफसी गैस यूज होती है। मीथेन इज यूज्ड इन गैस सिलेंडर्स, जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर मीथेन गैस भी डाली जाती है। सो इट इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द मैक्सिमम रेज ऑफ सनलाइट। वाटर वेपर्स, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सनलाइट की रेज को एब्जॉर्ब करते हैं। ओजोन लेयर इज ऑल्सो एब्जॉर्बिंग द सनलाइट, सनलाइट की रेज को ओजोन लेयर भी एब्जॉर्ब करती है। देन नाइट्रस ऑक्साइड पोल्यूशन से क्रिएट होती है। सो N2O is also a pollutant gas. So these all absorb the maximum rays of sunlight. Let me repeat again. What we did is, first is acid rain. You have to learn this. I will take your test in the evening. Acid rain and global warming and greenhouse gases. What is acid rain? When the harmful gases comes down with the rain, that harmful gases are sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and carbon monoxide. These gases causes acid rain. Then we did global warming and greenhouse gases. The gases which absorbs the maximum rays of sunlight, that gases are called greenhouse gases. And what is global warming? When the temperature of earth increases due to these greenhouse gases, that is called global warming. The names of greenhouse gases, you have to learn this. Carbon dioxide, C. Chlorofluorocarbon, C. CH4 methane, then water vapors, ozone layer, and nitrous oxide. You have to learn this. Okay. Then air water pollution. Air water pollution आपको पता है pollution create होता है. We will discuss in another class also very deeply. But for now, deforestation means cutting down of trees. Depletion of ozone layer का hole होना ozone layer में. So this is whole about our environment. So these are the factors which affect our environment is acid rain, global warming, greenhouse gases, depletion of ozone layer, deforestation, and pollution. Acid rain, when the harmful gases comes down with rain, that is called acid rain. What is global warming? When the temperature of earth increases, that is called global warming. What is greenhouse gases? The gases which absorbs the maximum rays of sunlight, these are called greenhouse gases. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।